Welcome to Vidyath. Today we are going to start 11th class biology and we are going to discuss the content first. See, you have all come with class 10th and now there is a vast difference in the course of 11th and 10th. So let's begin with our first unit. We have diversity in the living world, which will include 4 chapters. Chapter 1, the living world. Chapter 2, biological classification. Chapter 3, plant kingdom. Chapter 4, animal kingdom, right? And the second unit, you have to study structural organization in plants and animals. Chapter 5, we have morphology of flowering plants, means external appearance of the flowering plants will be discussed. Chapter 6 is anatomy of flowering plants, in which internal structure of the flowering plants will be discussed. And chapter 7 includes structural organization in animals, in which we will study about tissues in the animals. Okay, we have epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. We are going to discuss it in detail with frog, cockroach and earthworm. Next we have a unit 3. The unit 3 is cell, structure and functions. Chapter 8, cell, the unit of life. You know, you have studied in class 9th about cell, mitochondria, Golgi apparatus, nucleus, everything will be discussed detail in this chapter. Next chapter is chapter 9, biomolecules, means the molecules which are present in the living organisms, and living organisms are made up of molecules. They are known as biomolecules. We are going to discuss it in detail. And the next chapter will be chapter 10, cell cycle and cell division. In this we will discuss about mitosis and meiosis, a very important part. Each and everything is important, right? Next we have unit 4, plant physiology, means plants functioning is mentioned here. Chapter 11 is transport in plants, how water, minerals, food is transported with detailed description. Chapter 2 we have mineral nutrition, micronutrients, macronutrients, their toxicity, everything will be discussed in this chapter. Chapter 13 is photosynthesis in higher plants. Earlier you studied that the reaction carried out in the presence of light and plant prepare food in the process is known as photosynthesis. In this chapter you are going to discuss many cycles and photosynthesis in a very detailed form, right? Chapter 14 is respiration in plants like aerobic, anaerobic, Krebs cycle, all the respiration in plants will be discussed in chapter 14. Chapter 15 we have plant growth and development. In class 10th you must having hormones like auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene. All these things are to be discussed in this chapter in detail with their functional and their natural and synthetic form, right? Unit 5 is very important, human physiology. Chapter 16, it's digestion and absorption. Chapter 17 is breathing and exchange of gases. Chapter 18 is body fluids and circulation, means heart and their body parts. And chapter 9 is excretory products and their elimination. Chapter 20 is locomotion and movement. And chapter 21 will be neural control and coordination. Chapter 22 will be chemical coordination and integration. See, we have a very long list and we have 22 chapters incomplete. There is a vast difference in the course. Each and everything from 11th is very important for NEET, as you are going to be a doctor and you want to become a doctor. All those people you should focus, right? So, today we will start with our first unit, diversity in the living world, and the first chapter will be chapter 1, the living world. Let's start. What do you mean by biology? First of all, you are going to take a good subject, right? Biology. So, what do you mean by biology? Biology is science. We all know it is a science of life forms and living process. Means what are the life form present in this earth and what are the living process and what are the process carried out in our body,
right? Biology is also a story of life on earth, and biology is story of evolution. Evolution means from generation to generation things are carried out of living organisms on earth. कैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, कैसे हम आए हैं, कैसे सिंगल सेल फॉर्म हुए थे, कैसे मल्टी सेलुलर बने हैं, हाउ आर प्रोकैरियोट्स अराइज एंड नाउ मोर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैव केम, राइट? Now, biology, the term biology is derived from the Greek word bios, means life, and logia means study of. Biology is the study of life and living organisms, right? See, you have to refer some book. Please firstly focus on your NCERT, your school course, and the notes are enough. You have to write down whatever slides is coming. It's prepared well and you have to note it down properly. Fine. You can refer Dinesh, Pradeep or Truman's, but they have a very vast course, so prefer some limited editions, right? And go for NCERT and their back exercise and questions. So next our topic will be what is life. Technically, life is between living and non-living things, obviously, and philosophical, it is what is the purpose of life. So, life can be defined as the property or quality of the living organism जो कि उसको dead और non-living thing से different करता है, right? Fine. Next, what is living? The main characteristics of living are 5 main characteristic feature which differentiate living and non-living things must be. First is growth, second is reproduction, third is metabolism, and fourth is cellular organization, fifth is consciousness. It's very important. 5 features of the living organism are growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. See, growth and reproduction are not defining property. It's very important to remember that what are the defining properties of living organisms and what are the not defining properties of a living organism. So growth and reproduction, we have both, they are not defining property of the living organism, but metabolism, cellular organization, consciousness is the defining property of the living organism. See, what is the difference between defining property and not defining property? You know, growth takes place in living organisms as well as non-living organisms. See, growth is of different types like external और internal. So हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी में हाइट सब इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, वैसे ही अगर दीवार है वो हाइट में बढ़ रही है तो वो भी एक ग्रोथ है. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में आपको कोई ना कोई एक्सेप्शंस मिलते हैं, इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं होती है. और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस में आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है. ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को ही मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन. देयरफॉर दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. वी हैव written down the definition here. Defining property, characters which have no exceptions are called defining property. Done. Next, what is growth? Let's discuss it in detail. What is growth? So growth is increase in mass. अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो दैट इज ग्रोथ. अगर हमारी साइज, ओवरऑल साइज बढ़ रही है, चाहे टिश्यू की, चाहे ऑर्गेनिज्म की या किसी पार्ट की, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ. सो इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ. सी, नेक्स्ट, अगेन व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. अगर वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है, अगर नंबर बढ़ रहा है तो वो भी ग्रोथ है. सो increase in mass and increase in number of individuals are twin characters of growth. Though very important features of growth are increase in mass and increase in number of individuals, right? So next point is growth is an irreversible permanent increase. एक बार growth हो जाता है तो वापस reversible होता है क्या, छोटा हो जाता है क्या? नहीं होता. So growth is an irreversible permanent increase in size of organ or its part. Okay. Next, growth is result of metabolism. We will discuss about metabolism. आप सबको पता होगा what do you mean by metabolism. Metabolism बोलने से the sum total of all the reactions occurring in our body. हमारी बॉडी में जितने भी, देखो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है,
जैसे एटम्स है उनमें भी रिएक्शंस चल रहे हैं, आप लेबोरेटरी में भी रिएक्शंस कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही हमारी भी लिविंग ऑर्गेनिज की बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, और वो जो रिएक्शंस चलते रहते हैं उन कंप्लीट सेटअप ऑफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फाइन। Growth is result of metabolism. So growth is of two types, anabolism and catabolism. anabolism में क्या होता है, कोई चीज़ जब बनती है तो दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म, मतलब जो रिएक्शंस में कोई चीज़ें बन रही है दैट इज एनाबॉलिज्म, और जब कोई चीज़ें टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ कब होगा, ग्रोथ तब होगा जब हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस चल रहे हैं, जो बनाने वाली रिएक्शंस है वो ज़्यादा होंगे और जो टूटने ब्रेक डाउन होगा वो कम होगा। सो ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हेन एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, राइट। नेक्स्ट, growth is of two types. So we have two types of growth, intrinsic growth and extrinsic growth. So growth is from inside of body of living organism. अगर growth body के inside में चल रहा है तो that is intrinsic, और अगर ग्रोथ बाहर चल रहा है बॉडी के, उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ द ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है दिस ऑकर्स इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइन। अगेन ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, अनलिमिटेड और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ। सो अनलिमिटेड और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ विच ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जो कंटिन्यूसली लाइफ स्पैन में चलता ही रहता है। जैसे प्लांट्स में अनलिमिटेड है, कोई भी पार्ट्स ग्रो करते हैं हमेशा ही ग्रोथ होता रहता है। और दूसरा टाइप का जो ग्रोथ है वो है लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ विच ऑकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज में, और लिमिटेड ग्रोथ है। जैसे हमारे हाथ दोनों बराबर लेंथ में बढ़ेंगे, पैर बराबर लेंथ में बढ़ेंगे, एक सर्टेन एज तक की ग्रोथ होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज आ जाता है, उसके बाद एजिंग और सेनेसेंस हो जाता है। तो लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होता है वो एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक होता है, दैट इज एग्जाम्पल्स इन एनिमल्स, राइट। सो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन आवर नेक्स्ट feature or characteristic of living organism is reproduction. Okay, so production of new individual is called as reproduction. Reproduction in case of multicellular organism is production of progeny similar to those of parents. किसी किसी multicellular में exact similar to parents बनते हैं, और in case of unicellular organism amoeba is increase in number of cells. तो multicellular organism में progeny के बढ़ते हैं as compared to similar to their parents, और unicellular organism में parents अपनी identity loss कर देता है and there is increase in number of cells, right? In bacteria, unicellular algae and in some amoeba there is increase in number of cells. So reproduction में अपन यही नहीं बोल सकते हैं कि there is the formation of new species from the parents or the existing one. This is the perfect definition. फिर चाहे वो multicellular में हो चाहे वो unicellular में हो, यहाँ पे number of cells भी होता है और parents की exact copy भी बनते हैं। So reproduction is not found in living objects, right? फिर भी हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोलते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आप अभी आगे देखोगे। जैसे ग्रोथ जो होता है वो लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है, एक्सेप्शन आ गया, सिर्फ लिविंग में नहीं है, इसीलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं। बट रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, बट फिर भी हम उसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव सम एक्सेप्शंस, वी विल डिस्कस इट, राइट। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट reproduce. There are so many organisms which do not reproduce. First example is mules. Mules आपने सुना होगा, this is the combination of honey and donkey produced by artificial means by human beings, right? They contain the features of horse and donkey. So the combination is mules. Next is sterile human couple. Some sterile human couple are unable to produce their progeny. So there is also one more exception, sterile human couples. Next very important example is, this is a very important line, worker honeybees. See honeybees में, मधुमक्खियों में हमारी 3 प्रजाति देखी जाती है, प्रजाति नहीं बोल सकते, 3 टाइप्स होते हैं, उनके फॉर्म्स होते हैं, लाइक क्वीन, राइट,
First is queen, second is drone, and third is worker honeybee. So queen and worker honeybee, they both are females and drone is male, right? So queen is diploid and worker honeybee is also diploid, but it is sterile, and drone is haploid. So worker honeybee are sterile, they do not produce any offsprings. Okay, so we have exception in the reproduction like mules, sterile human couple, worker honeybee. So reproduction is not a defining property. Clear? So reproduction cannot be taken as defining property. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में. हम वी विल ऑल्सो डिस्कस रिप्रोडक्शन इन डिटेल इन क्लास 12, नॉट नाउ. सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproduction. We all know that asexual means uniparental, sexual means two parents are involved. Asexual में meiosis नहीं होता, सेक्सुअल में मियोसिस होता है. एसेक्सुअल में पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, देयरफॉर दे आर नोन एज क्लोन्स. सेक्सुअल में पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते, इसलिए दे आर नोन एज ऑफ स्प्रिंग्स. दिस ऑल रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्लास 12th. So our next characteristic feature of living organism is metabolism, right? I already discussed it in the beginning. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. जितने भी chemical reactions, तो एक्चुअल में अगर आप लैब में भी बोल रहे हो केमिकल रिएक्शन और अगर आप लिविंग बॉडी के अंदर भी बोल रहे हो केमिकल रिएक्शंस, तो इट इज़ नॉट गुड. सो लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं हम उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ यूनिसेल्युलर, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनमें मेटाबॉलिज्म चलेगा, राइट. सो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म. कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस नहीं होता, इसीलिए we say that metabolism is the defining property of the living organism, right? So metabolism is of two types, already I have discussed it. Anabolism, it is the formation of products जब बनते हैं, टूटता नहीं है, चीज़ें बन रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किए तो वो क्या बना है, ग्लूकोज बना. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म. अब क्या कैटाबॉलिज्म, कैट मतलब कट कर रहे हो आप, तोड़ रहे हो. सो इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस. तो जैसे हमने ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में तोड़ा, सो दैट इज कैटाबॉलिज्म. फाइन. सो एनाबॉलिज्म इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस. सो मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन चलते हैं वो होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ग्रोथ होगा, अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो ग्रोथ नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. आप 9th में ऑलरेडी सेल चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए हो कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी पूरी बॉडी, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलर हो, सेल से ही मिलके बनती है. सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. सो आवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, है ना. सो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सम सेल्स आर सिंगल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम सेल्स कंटेन मेनी सेल्स, सो दे आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेल का डेफिनेशन आप लोग को पता है, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल क्यों बोले, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सेल होगा. सो दिस इज द फंडामेंटल फीचर. स्ट्रक्चरल मतलब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है वो सब्सटेंस फंक्शन करते हैं. सो सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल, all body structure is made up of cell and all the functions are performed by the cell. So cellular organization is proved to be a defining property of a living organism because ये non living organism में भी नहीं मिलता और कोई exception भी नहीं है. So metabolism, cellular organization and consciousness, ये तीनों आप किसके अंदर लेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है. सी ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर NCERT. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट.
treat NCERT as a Bible and read it properly, word to word, because in NEET, all the questions are going to come from NCERT with some exceptions, right? Focus on your NCERT, plus we are going to take detail, so it will be completed. Next our feature of living organism is consciousness. See, ability to sense the surrounding environment and responding to environment stimuli is called consciousness. हम सेंस कर लेते हैं environment में कैसा मतलब माहौल है या क्या है, ठंडा है, गर्म है, और फिर उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस. इट इज़ अ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, बट ये बहुत लेट से मॉडिफिकेशन हुआ एंड ह्यूमन में ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में है. सो इट इज़ अ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. All organisms from prokaryotes. You all know about prokaryotes. Pro means primitive and karyon means nucleus, means the organisms which contain simple form of nucleus, not well defined nucleus, no nuclear membrane and no cell organelles are known as prokaryotes. And in eukaryotes, EU means true and karyon means nucleus. So EU means true and karyon means nucleus, means we have true nucleus, and that is nuclear membrane is present, nucleus is well defined and cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus are present, right? आप अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल यूनिट सेल में, बट टिल देन यू मस्ट नो वेरी क्लियरली व्हाट इज प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट आर यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में आपको बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया, मोनेरा आता है, किंगडम मोनेरा, उसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट, एंड माइकोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स में आती हैं. एंड यूकैरियोट्स में आपका आता है प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया, राइट. सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी एनवायरनमेंट स्टिमुलस प्रोवाइड करता है उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं. फाइन. So, some common examples of consciousness can be seen in organisms like plants perform flowering in particular season, photoperiodism. Animals perform breeding in a particular season, only seasonal breeders. तो इसमें कुछ common examples दे रहे consciousness. Environment को देखते हुए आप देखोगे कि कुछ flowers कुछ particular season में ही flower करते हैं, तो because of light, उनको इतनी light चाहिए होता है, वो चाहिए. So this is photoperiodism. और कुछ animals जैसे cow and all, they perform breeding in a particular season. They are known as seasonal breeders. Human is concerned with high level of consciousness. Human have a very good level of consciousness because of presence of well developed nervous system. So we have a very good skill of communication. Self consciousness thought to be present in all humans. We are very self conscious. We are alert for everything, right? And living organisms are self-replicating, we multiply accordingly, evolving and self-regulating, right? Adaptation and hemostasis are also very important character of living organisms. Other than growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness, we have adaptation and hemostasis as a feature of living organisms, right? What do you mean by hemostasis? See, the process by which the body reacts to change in order to keep same condition inside the body. हम अपना temperature maintain करते हैं, we have a 37 degrees Celsius of temperature, every time we try to maintain that, right? So the process जिसमें हमारी body maintain कर लेती है changes को और हमारी body की condition same रखती है, that is known as hemostasis. Fine. नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक तो सिर्फ हम इंट्रो देख रहे थे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट term and most important topic we are starting from here. So what is taxonomy? It's a very new word for you all. Taxonomy is the branch of biology. See, we in biology feels that we have a two branch, botany and zoology, but there are many branches in biology and most important branch इज टेक्सोनॉमी. एक्चुअल में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड मीन्स हमको यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ में उनको स्टडी करना है कि उनमें कौन सा फीचर्स प्रेजेंट है, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये सारी डिस्कस करना है.
तो लिविंग ऑर्गेनिस के बारे में कितने लिविंग ऑर्गेनिस प्रेजेंट है, क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी आया, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उसको फिर नामकरण करना है और फिर उसको क्लासिफाई कर देना। अगर अभी के प्रेजेंट डाइवर्सिटी में हमारे पास 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो हम लोग इतने सारे स्पीशीज़ का नाम और डिटेल याद नहीं रख सकते। So we are going to classify them with the basis on their similarities, right? So taxonomy was the word, it is the branch of biology, and the term was proposed by the scientist A.P.D. Condole. Fine. So taxonomy, it is a branch of biology which deals with the study of principles and procedure of classifications, right? So it is the branch of biology or the study of principles and procedures of classification. It includes identification. अगर कोई living organism आ रहा है तो हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर nomenclature करेंगे। nomenclature मतलब नामकरण करेंगे और फिर उसको similarities और dissimilarities के बेसिस पे उसको various groups में classify कर देंगे। So the living world is full of amazing diversity. We have a lot of varieties of diversity is what? Varieties of living organisms present on the earth. So the living world is full of amazing diversity of living organisms and the diversity of habitats. हमारे habitats भी different है हर living organism के, very vast और amazing है। कोई पानी में रहता है, कोई caves में रहता है, कोई herbs में रहता है, कोई buildings में रहता है, different. So process of taxonomy includes, first of all we will see with characters, then we will identify. जैसे एक बच्चा अगर born हो रहा है तो सबसे पहले we go for male or female, then we give nomenclature and then we go for a classification, right? So characterization, identification, classification and nomenclature. आपको नामकरण भी करना है। Next, some important points related to taxonomy. Practical significance of taxonomy is, main जो practically हम taxonomy एक पूरी branch of biology है वो क्यों है, because उसका main practical significance है identification of unknown organisms. कोई भी organism अगर new है, कुछ different दिख रहा है तो उनको identify करना है, उनको classify करना है, उनका नामकरण करना है, nomenclature करना है, ठीक है। So practical, these points are very important because it's given in your NCERT, okay. So practical significance of taxonomy is identification of unknown organisms. Maximum diversity is found in tropical rainforest. Second maximum diversity is found in coral reefs, right? The number of species that are known, जो अभी तक known है और डिस्क्राइब किए गए हैं वो है 1.7 to 1.8 million. This refers to the biodiversity. Bio means living organisms present on the earth or the type of organisms present on the earth. Fine. Next, systematic. Again, this is also a study, means taxonomy is a branch of biology in which we discuss identification, nomenclature and classification. Again systematic. Systematics word से ही समझ में आ रहा है कि हमको सिस्टम से चीज़ों को अरेंज करना है। तो अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है तो आपको उसका फीचर, उसका नामकरण, उसको क्लासीफाई करना है। उसके बाद यू हैव टू कंपेयर कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, कहाँ से आया था, कैसा एवोल्यूशन हुआ था, उसका ऊपर का अपीयरेंस कैसा है, उसका इंटरनल अपीयरेंस कैसा है, राइट। सो द टर्म सिस्टमैटिक वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस. सी वी हैव अ गुड पिक्चर ऑफ कैरोलस लिनियस हियर showing in the slide. Carolus Linnaeus is a very important scientist because he is also known as father of taxonomy. Means the branch of biology which deals with identification, nomenclature and classification. So he is known as father of taxonomy. Fine. He gave the term systematic, and systematic is the study of diversity of organisms and all their comparative and evolutionary relationship. मतलब आप पहले various diversity of organisms देखते हो, उनको compare करते हो, उनका relationship, evolutionary relationship plus external morphological characters of plants and animals. इसमें
Morphology of roots, morphology means ऊपर का appearance root का, external features of roots, stems and leaves is considered. See, इसमें इन्होंने internal feature नहीं लिया है, इसलिए कई बार इस definition को we go with old systematic. फिर एक और scientist आया जिसने systematic के definition में और rules में कुछ changes किए, so उसको हम बोलते हैं new और neo systematics, a new branch given by Julian Huxley in year 1940, जिसमें उन्होंने बोला कि it's fine कि you are giving a characteristic feature, you are giving a evolutionary relationship, you are giving the external feature, but what about the internal structure? So it includes the description of external and internal structure along with structure of cell and development. So new systematic also includes internal structure, structure of cell and how the cell develop, everything to be concluded in systematics. So today we learned about what are the features of living organism: growth, metabolism, reproduction, cellular organization and consciousness. Growth and reproduction are not defining properties, and rest free, metabolism, cellular organization and consciousness are defining property of the cell. And then we discussed diversity, we discussed taxonomy, we discussed systematics. So today I am ending my topic here. From tomorrow we are going to start with what is binomial nomenclature, which was also given by Carolus Linnaeus, and we will go with hierarchy of classification and some taxonomical aids. Fine. And this topic's question will be asked in your next class. Please students, write down the notes properly and be ready to give the answers. Thank you.